What is meant by substance? Substance can be defined as that kind of matter where constituent particles cannot be separated from each other by any physical process since they are all similar in chemical properties. तो हम substance उसको बोलते हैं जिसको हम अलग ना कर पाए physical process से, और वो सारे चीज़ें मतलब वो substance chemical properties में भी क्या हो, एक दूसरे के साथ similar हो, एक जैसा हो. जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं शुगर, सॉल्ट, ये सब ऐसे सब्सटेंस है जिसको आप फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते. नेक्स्ट, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस एंड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन. सो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का हम डिफरेंस देख रहे हैं. होमोजीनियस, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. हेट्रोजीनियस, they do not have a uniform compositions throughout the mixture. इसका मतलब क्या यूनिफॉर्म compositions? यूनिफॉर्म compositions का मतलब आपको सोल्यूशन के अंदर कोई भी सोल्यूट अलग से दिखाई ना दे. अब सोल्यूट क्या होता है कि जैसे आपने शुगर सोल्यूशन बनाया, सपोज करो शुगर आपको अलग से दिखाई दे, तो इसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है. बट आपको पता है शुगर आपको कभी भी दिखाई नहीं देगी अगर एक बार वाटर के अंदर मिल जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. और नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का एक एग्जांपल है सैंड एंड वाटर. जैसे ही आप सैंड को वाटर में मिलाओगे तो ये दोनों मिलेंगे नहीं. दिस इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. आई होप आपको समझ में आया. वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. द कंपोनेंट्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन बट सेपरेशंस टेक प्लेस बाय डिस्टिलेशन. इसका मतलब क्या है कि आप चाहो तो भी फिल्टर पेपर से इन दोनों पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते जो होमोजीनियस मिक्सचर में होते हैं. वहीं पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम फिल्ट्रेशन की मदद से हम अलग कर सकते हैं पार्टिकल्स को. थर्ड पॉइंट हमारा एग्जांपल्स आर सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर, शुगर एंड वाटर मिक्सचर, जैसा कि मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं. थर्ड, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में एग्जांपल्स आर अ मिक्सचर ऑफ सल्फर पाउडर, आयरन फाइलिंग्स, केरोसिन ऑयल एंड वाटर. आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर में हमें सॉल्यूशंस के बीच में कोई बाउंड्री नहीं दिखाई देगी, वहीं पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमें बाउंड्रीज दिखाई देगी, जैसे कि आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है. होप सो डिफरेंस दोनों का समझ में आया. अगर आपको 2 मार्क में पूछा जाए, 3 मार्क में पूछा जाए तो आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. आई होप सो ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे. अब हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सिमिलर बेसिस पे ही डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल. सो आप सेम आंसर्स लिख सकते हैं इस क्वेश्चंस के लिए. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. हाउ आर सोल सॉल्यूशन सस्पेंशन डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर. सो सोल काइंड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होता है सस्पेंशन. क्लियर. So first point, it has disperse phase and dispersion phase. It has soluble solute and solvent phase. It has insoluble solute suspended in the solvent medium. The second point, it appears homogeneous but is heterogeneous. Solution हमारा it is homogeneous और suspension हमारा heterogeneous होता है. Third point, particles are visible with the help of electron microscopes. Solution में third point, particles are not visible by all means. Suspension में particles are visible by naked eye. So suspension में दिखाई देता है. Fourth point, particle size is 10⁻⁻7 to 10⁻⁵ सेंटीमीटर. यहाँ पे particle size solution में 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे फोर्थ सस्पेंशन का पॉइंट 10⁻⁵ सेंटीमीटर का होता है. एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं. गोल्ड सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और यहाँ पे शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, और यहाँ पे मडी रिवर वाटर एंड डस्ट स्टॉर्म. दीज आर द एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू मेक ए सैचुरेट सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन. फाइंड इस कंसनट्रेशन एट दिस टेम्परेचर. तो इसको करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. ओके, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड जो हमारा सल्यूट है वो 36 ग्राम का है, सॉल्वेंट हमारा 100 ग्राम का है, तो इनका सोल्यूशन जो बनेगा वो 136 ग्राम का बनेगा.
Therefore, concentration percentage is equals to mass of solute upon mass of solution. ये फॉर्मूला अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो हमें आंसर जो आएगा वो 26.47 के बराबर है. दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन. आप डिवाइड करके एक बार देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव कर रहे हैं. हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल? सो difference in their boiling point is more than which are miscible with each other. So we can separate a mixture containing kerosene and petrol by distillation technique. So इस टेक्निक में boiling point दोनों का ही differ है. Since difference in their boiling point is more than, so through distillation we can get them separated. इसमें होगा क्या, पेट्रोल पहले ही इवापोरेट कर जाएगा तो वो हमें अलग कंटेनर में मिल जाएगा और उसके बाद केरोसिन हमें अलग होते हुए मिल जाएगा इसके अंदर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट. तो फर्स्ट के लिए सेंट्रीफ्यूगल मेथड, दूसरी के लिए इवापोरेशन मेथड, थर्ड के लिए सब्लिमेशन मेथड. व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? From impure sample of solid, pure solid crystals can be obtained by method of crystallization. For example, to obtain pure sugar from impure sample of the same. इसमें होता क्या है, हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड में जनरली हम लिक्विड फॉर्म में लेते चीज़ों को और उसको हीट अप करते हैं और हीट अप करने से हमें क्या मिलता है कि इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो इवापोरेट कर जाती है और हमें प्योर सैम्पल ऑफ द सब्सटेंस मिल जाता है. Next question, write the steps you would use for making tea. Use the words solution, solvent, solute, dissolved, soluble, insoluble, filtrate and residue. ये क्वेश्चन तो कॉमन क्वेश्चन है, घर में सबने चाय बनाई हुई है. टेक मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट, सॉल्वेंट, वाटर, सॉल्वेंट हमारा वाटर हो गया इन ए पैन, एंड आफ्टर हीटिंग इट एड लिटिल अमाउंट ऑफ सल्यूट, शुगर टू द सॉल्वेंट. Solute will dissolve completely in the solvent forming true solution. ठीक है, डिजॉल्व हो जाएगा और हमें ट्रू सोल्यूशन मिलेगा. Then add tea leaves that are insoluble along with another soluble liquid milk. After boiling, allow filtration with a sieve so the filtrate you obtained is tea while the residue has tea leaf that are thrown away. तो आपको पता है चाय हम कैसे बनाते हैं और चाय का फिल्ट्रेशन करते हैं आफ्टर मेकिंग द टी और उसे फिर पीने का यूज़ करते हैं और जो हमारे पास रेसिड्यू कचड़ा बचता है हम उसे थ्रोन अवे, गार्बेज में थ्रो कर देते हैं. होप सो यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस. सो कटिंग ऑफ ट्री, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, रस्टिंग ऑफ अलमारी, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, passing of electric current through water and the water break down into hydrogen and oxygen gases, dissolving common salt in water, making a fruit salad with raw fruits and burning of paper and wood. So first हमारा cutting of tree हमारा physical change है, यहाँ पे by mistake chemical change लिखा हुआ है. Next, melting of butter in a pan is a physical change. Rusting of almari, again chemical change. Boiling of water to form steam, it's a physical change. Passing of electric current through water and the water break down into hydrogen and oxygen gases is a chemical change. Dissolving common salt in water is a physical change. Making a fruit salad with raw fruits, physical change. Burning of paper and wood, chemical change. Now question number 11, try segregating the things around you as pure सब्सटेंस और मिक्सचर. सो प्योर सब्सटेंस वाटर, सॉल्ट, शुगर आपका प्योर सब्सटेंस है. मिक्सचर सॉल्ट, वाटर, सॉइल, वुड, एयर, कोल्ड ड्रिंक, रबर, स्पॉन्ज, फॉग, मिल्क, बटर, क्लोथ्स, फूड. ये आपके पूरे क्या है, मिक्सचर है. हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग?
So sodium chloride from its solution in water, ammonium chloride from a mixture containing sodium chloride and ammonium chloride, small pieces of metal in the engine oil of a car, different pigments from an extract of flower's petal, butter from curd, oil from water, tea leaves from tea, iron pins from sand, wheat grain from husk, fine mud particles suspended in water. So solution देखते हैं. First, evaporation technique. Second, sublimation technique. Third, filtration technique. Fourth, chromatography technique. Fifth, centrifugation. Sixth, separating funnel. Seventh, filtration. Eighth, magnetic separation. Ninth, winnowing and sedimentation. And 10th, decantation and filtration. Next question. How will you separate a mixture containing kerosene and petrol which are visible with each other? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं. यू नो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होती है जिससे हम ये सेपरेट करते हैं. यू ऑलरेडी आर अवेयर. So heading towards the next question. This is the figure of the technique how we will separate kerosene and petrol from each other. And this is the procedure. If you want to write, you can write it. Now next question. Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data as given below. So you have an data. You can see here substance dissolved. So according to data, pehla question, what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin? Second question, Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 363 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? Explain. Third question, find the solubility of each salt at 293 Kelvin. What salt has the highest solubility at this temperature? What's the fourth? What's the effect of change of temperature on the solubility of a salt? So students, आप इस क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक लेके साथ में बैठिए तो ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि आपको डेटा दिखना पड़ेगा. At 313 Kelvin, 62 gram of potassium nitrate dissolved in 100 gram of water. So to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water, we need 62 into 50. That is 31 gram of potassium nitrate. Okay. Second question, some soluble potassium chloride will separate out in the form of crystal at room temperature because the solubility of potassium chloride will decrease in temperature. Will decrease with decrease in temperature. Third, solubility of potassium nitrate is 32 gram. Solubility of sodium chloride is 36 gram. Third, solubility of potassium chloride is 35 gram. And solubility of ammonium chloride at the same temperature is 37 gram. ये जो भी मैंने बताया ये सारा डेटा 293 केल्विन के लिए था. Now, solubility of ammonium chloride is highest at this temperature. The solubility of salt increases with increase in temperature. Now, we are heading towards the next question. Explain the following, giving examples. Okay. First, A. Saturated solution. B. Pure substance. C. Colloid. D. Suspension. So, saturated solution ka example, it is a solution in which no more solute particles can be dissolved at a particular temperature. Pure substance, such substance that has a uniform composition that has particles with identical property is called pure substance. Example, sugar, salt, water, nitrogen, etc. C. Colloid. A colloid is a heterogeneous mixture. The size of the solute in this mixture is so small that they cannot be seen individually with the individuals with naked eye and seems to be distributed uniformly throughout the mixture. The solute particles do not settle down when the mixture is left undisturbed.
This means that colloids are quite stable. Colloids cannot be separated by the process of filtration. They can be separated by centrifugation. Colloid shows the Tyndall effect. For example, milk, butter, foam, fog, smoke, cloud. D. That is suspension. Now we are going to talk about the suspension particles. With suspension are heterogeneous mixture. The solid particles in this mixture remain suspended throughout the bulk of the medium. The particles can be seen with the naked eye. हम देख सकते हैं इस पार्टिकल्स को. सस्पेंशन शोज द टिंडल इफेक्ट. ये टिंडल इफेक्ट शो करता है. मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ, उसके थ्रू आपको समझ में पड़ जाएगा क्या है टिंडल इफेक्ट. The solute particles settle down when the mixture is left undisturbed. This means that suspensions are unstable. Suspension can be separated by the methods of filtration. For example, mixture of chalk powder and water, wheat flour and water can be separated easily with the help of filtration method. Heading towards the next question, classify each of the following as homogeneous or heterogeneous mixture. So our questions are soda water, wood, air, soil, vinegar, filtered tea. Solution. होमोजीनियस मिक्सचर सोडा वाटर होता है, एयर होता है, विनेगर होता है. और एक चीज फिल्टर्ड टी भी आपकी होमोजीनियस ही होती है. ठीक है. हेट्रोजीनियस में आपका वुड और सॉइल आएगा, दो ही. हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिव टू यू इज प्योर वाटर. अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे अगर आपको कलरलेस लिक्विड दिया गया है वो वाटर है. If we allowed the given liquid to evaporate by heating it as in a clean china dish, so any residue remaining in the china dish will indicate that the water is not pure but contains impurities. No residue in china dish will indicate that water is pure. अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप वाटर को बॉईल करोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे. अगर वो बॉईल हो जाता है तो वो वाटर है. अगर वो बॉईल नहीं होता है तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज अवेलेबल है. तभी वो 100 डिग्री ऊपर जाके कहीं बॉईल होगा. आई होप दैट इज क्लियर नाउ. वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस. ए आइस, बी मिल्क, सी आयरन, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ई कैल्शियम ऑक्साइड, एफ मर्क्यूरी, जी ब्रिक, एच वुड एंड आई एयर. So pure substance are ice, iron, hydrochloric acid, calcium oxide, mercury. Identify the solution among the following mixtures. Soil, sea water, air, coal, soda water. इसमें से आपको mixtures identify करने हैं. तो sea water, air, soda water are solutions which are mixture. आप लोग को ये पता है ये सारे mixtures हैं. So अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. Which of the following will show Tyndall effect? सॉल्ट सोल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, स्टार्च सोल्यूशन. कौन सा इसमें से टिंडल इफेक्ट शो करेगा, हमें ये पता लगाना है. तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है, जो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट है अगर हम पास करें किसी सोल्यूशन में से, अगर स्प्रेड हो जाए तो वो टिंडल इफेक्ट हमें शो करेगा. मतलब वो पार्टिकल से टकरा के क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, तो वो हमें विजिबल दिखाई देगी वो लाइट्स. So milk and starch solution have large particles. Since they are not true solutions, so they will show Tyndall effect. Next question, classify the following into elements, compound and mixture. First, sodium, soil, sugar solution, silver, calcium carbonate, tin, silicon, coal, air, soap, methane, carbon dioxide, blood. Solutions जो element है first, सोडियम, सिल्वर, टीन और सिलिकॉन हमारा एलिमेंट्स है. कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड. और मिक्सचर्स हमारा सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, कोल, एयर, सोप और ब्लड है. हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस. ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, मिक्सिंग ऑफ आयरन, फाइलिंग्स एंड सैंड, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कैंडल. ओके, तो इसमें से हमें बताना है केमिकल चेंजेस कौन कौन से. तो फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज ए केमिकल चेंज. रेस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है. कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सारे केमिकल चेंजेस है.
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें कमेंट करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.